Okay, now welcome students. Once again, we are in our physics doubt classes. So here, myself, Jitendra Sinha, once again, along with you. Now, what's your doubt? Please get it. Yes, we are here to clear the doubt. Whatever your doubt in physics, go through it. Are the students listening here? Yes, sir. हाँ बोलो किसी तरह की डाउट? यस. Yes, sir. हाँ बोलो. Sir, a man is walking in the square field, and its sides measure is 14 meter, and it completes one rotation in 216 seconds. So find the displacement of man after 390 seconds. Sir, how to make in the process? This thing I know. I want to know. Now you just repeat your question and just note it down. What are the given points are there? First of all, you repeat your question. Yes, sir. Sir, there is a square boundary. Okay, field, just to go through the and figure. it's a figure. You just okay. 1 minute. It is a square boundary. Square field is given there. Yes, sir. Okay, are you getting it point? आपको मिल रहा है Yes. स्क्वायर? Suppose करो ये Yes, sir. ABC स्क्वायर फील्ड है, A, B, C and D. And now the side of the square field, how much? Sir, it's 14 meter. 40 meter. Okay. Yes, sir. Side of the square field is And 40. sir, Yes, follow. and sir, a man completes its one rotation in 260 seconds. In 260 seconds, it means if the man starts from point A, if A is the initial point, you see, and the man moves towards the square field from A to B, B to C, C to D, and then D to A again. So when the man comes here at the point A again, then we say that it has completed one rotation now, or we can say the one round. So for that, the time taken is how much? Time for one rotation. Sir, 260 seconds. 260 seconds, okay? It is 260 yes, sir. seconds. Yes, sir. So and now you just see in 260 seconds how yes, much sir, how much distance the man covers. Since you know the side, one side measure 40 meter, it means for this we will find out the distance in one rotation. So we will see the distance in one rotation. Distance forward in one rotation. So simply we can say the perimeter of this square field. So perimeter of 160 meter. yes, sir. 4 in 40. So you are getting 160 meter. So it covers 160 meter in 260 seconds. Okay. Then what is your question? Yes, you repeat your Sir, question. what is the displacement of man after 390 seconds? Okay, after 390 seconds, you see just your total time is 390 seconds. Total yes, time is 390 seconds. Just to see here that in one rotation, the man comes to the point A again. Okay, ये 260 seconds में. Then after you see the remaining how much? 130 seconds. So in 130 seconds, the man will again go from, and it will finally after 390 seconds, the man will reach at the point C. You see, the man will reach at the point C, and then
the displacement of the man is given by joining the line AC. So we can see that C is the final position. Final position of man after 390 seconds, right? C is the final position of the man after 390 seconds, and the displacement is represented by, so that here the displacement is represented by the line AC. Now we will have to find out what is the value of AC. ठीक है? Now you consider this point. अभी AC को हमको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Now we will see. Okay, these points are clear. अभी तक ये सारे points जो आपको दिया है, ये एक आपका स्क्वायर फील्ड है. A man is starting from point A and he is making one complete round. That is, once again the man moved from point A to B to C to D and to point A again. So here the man completes one rotation. So एक rotation को complete करने के लिए the man is taking 260 seconds. ठीक है? So here the distance covered in 1 second is 160 meter. That is according to the perimeter of the square field. अभी तो देखो कि 260 सेकेंड के बाद फिर से यहां पर आ गया, तो हमारे पास कितना बचा? We were getting 130 second again. So after 130 second, if the man will continue his uniform motion, जिस तरह से वो जा रहा है, तो again it will come to the point C, और C इसका final position है after 390 seconds. ठीक है? So here we will see the displacement, and this displacement is given by the line AC. ठीक है? अब we have to find out the value of AC. Then what we will do? You just see here. अभी देखो कि if we consider this line, this triangle ADC. You see, triangle ADC, it is a right angle triangle. ठीक है? Right angle triangle में हम यहाँ पर we can use the Pythagoras theorem. So by according to this Pythagoras theorem, what we can do? That you just write down that according to Pythagoras theorem, this according to Pythagoras theorem, in right angle triangle, that is right triangle ADC, we can see the square of AC is equal to square of AD plus square of CD. ठीक है? ये तो आपको पता होगा ना कि according to Pythagoras theorem है. I think you have it. Now you calculate it कि आपका square है, so all the sides will be equal. So AD square, that is 40 square plus 40 square. So finally you are getting how much? 1600 plus 1600. That is 3200. 3200. And then the AC is equal to under root over 3200. So 3200 का आपको निकालना है. ठीक है? Then how we will find out the square root of 3200? Square root of 3200 हम इसको calculate करेंगे. ठीक है? You just do it. Calculate 3200. That is, this can be is equal to 32 into 100. ठीक है? And if we calculate 32 का square root देखेंगे तो कितना होगा? We are getting here, that is 10 into 4 root 2. That is finally 40 root 2. Root over 2 meter. ठीक है? Your displacement of this man is 40 root 2 meters. तो आप इसको 40 root 2 मीटर भी लिख के छोड़ सकते हो, या फिर root 2 का जो वैल्यू आप है
Root 2 का value, I think you should be knowing it, that the value of So root 2 is, 1.414. ठीक है? तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो. It is also a right answer. And if you want to put the value, you can insert the value of root 2. तो root 2 की value कितनी होती है? 1.41. तो 40.41. ठीक है? You can do it. Calculation, you can write it. ठीक है? Okay. Is it Okay, clear? sir. देखो इस तरह की क्वेश्चंस में फर्स्ट यू शुड सी व्हाट टाइप ऑफ द फील्ड इज. जैसे इसमें आपको पहली बार दिखा रहा है कि द मैन इज रनिंग ऑन अ स्क्वायर फील्ड. तो सबसे पहले आप फिगर बनाओ स्क्वायर फील्ड का. देन यू नोट इट डाउन द व्हाट आर द गिवन थिंग्स. आपको डाटा क्या क्या दिया है. जैसे आपको इसमें डाटा दिया है कि स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 40 मीटर है. ठीक है. And the man covers this one rotation in 260 seconds. तो 260 seconds में one rotation हो रहा है. मतलब starting from point A, moving towards B, then C, then D, and then again to point A. तो जब point A is the initial point, ये इसका starting point है. Starting point पर फिर से वो man आ गया. मतलब he has already covered one rotation. ठीक है. तो one rotation को उसने किसने cover किया था. तो फॉर दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. देखो इस क्वेश्चंस में आपको एक और क्वेश्चंस ऐड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मॉडल कि इसमें आपको डिस्टेंस कवर भी पूछ सकता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन दिस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 390 सेकंड्स में मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो देखो आप देख लो कि 260 सेकंड्स में उसने कवर किया 160 मीटर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन 160 मीटर. नेक्स्ट 130 सेकंड्स में उसने कितना कवर किया 80 मोर. दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 160 मीटर प्लस 80 मीटर. दैट इज 240 meters. So 240 meter is the distance covered by the man in this given interval of time, that is 390 seconds. Or the next question, your final question is the displacement. तो देखना है कि आपको 390 सेकंड के बाद उस पर्सन के या उस मैन के what will be his final position. So finally we see the position is at C. I think it is clear. Yes, sir. Okay. Okay. If you want to note it down, you can note it. Okay, yes, next. Any other doubt? So, Rani, you can just say the doubt there because sir is not seeing the phone. I think he can't see the raise your hand there. Okay, say your doubt there. Yes, sir. Sir, the tip of Yes, who is speaking out? Sir, the tip of second of a clock. The clock takes 60 seconds to move one circular dial of the clock. If the radius of the dial of the clock is 2.1 centimeter, calculate the speed of the tip of second hand of the clock. Okay, Rani, first of all, you see the figure. It is a clock. That is the round clock. Yes, sir. राउंड क्लॉक में पहले हम इसको फिगर बना लेंगे. आपका सेकेंड हैंड है ना. तो सेकेंड हैंड का व्हाट इज गिवन देयर रेडियस. Yes, sir. यस रेडियस ऑफ द सेकेंड हैंड. बोलो रेडियस ऑफ सेकेंड हैंड हाउ मच. 2.1 centimeter. 2.1 सेंटीमीटर. ओके देन हाँ उसके आगे बोलो. Sir, the clock takes 60 seconds to move one circular dial. Okay, so in one rotation, time taken is 60 seconds. Okay, time taken
to complete one rotation. हाँ बोलो, ये 60 सेकेंड है. Yes, sir. Okay. And now put your question. अभी देखो. Now here you will calculate कि how much distance it covers in one rotation. ये जो आपका second hand है, second hand कितना distance cover किया? So that distance covered is distance covered. So this distance covered is given by the circumference of the circle. पढ़े हो ना? Circumference of the circle. ठीक है? Since this is a circular type of object, ये circular type of clock is there. अब आप इसका circumference निकालोगे, तो circumference के लिए we see the formula 2 pi r, where r is the radius. Now you see here 2 into pi का value 22/7 into 2.1. ठीक है? अब इसको हम Yes, sir. ठीक है 7 how much 0.3 you are getting 66 into how much you are getting? You are getting 19.8. 19.8. It is in centimeters. So here it is. The distance covered in one rotation after 60 seconds. The hand flow here second hands it covers the distance of 19.8 centimeter. Now you repeat your final question. Sir, calculate the speed of the tip of the second hand of the clock. Calculate the speed. Time period is given. Now you have to calculate the speed. अभी देखो speed is equal to what you know? Distance by time. आपका यहाँ distance कितना आया है? 19.8 meter. Your distance is 19.8 centimeter. Okay, 19.8 centimeter. Time is 60 seconds. ठीक है? Yes, sir. Speed 19.8 centimeter, that is the distance, and time is 60 seconds. Okay, so you calculate it. How much you are getting? देखो यहाँ पर, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो या यहाँ नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल यूनिट है. So how much time it will take? You just calculate it. 19.8 divided by 60. Sir, 0.33 second. हाँ? Centimeter second. Yes, बोलो. Sir, 0.33 centimeter second. Okay, you have calculated. Yes, sir. हाँ देखो कितना आ रहा है. Sir, one doubt. एक मिनट इसको पहले कवर कर लो. तो 0.33 सेंटीमीटर 0.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? बोलो. Yes, sir. Sir, 2 into 22 into 0.3, how 19.8? You just see 2 pi r. R is the radius. ठीक है? आपका Yes, 2 sir. pi का वैल्यू 22/7. Yes, The sir. value of pi is 22/7 और रेडियस आपका कितना है? 2.1 है. Yes, sir. ठीक है? आप 7 से 2.1 का डिवाइड करोगे तो हाउ मच कितना होगा? 0.3 होगा. 0.3. 1 है 0.3, that is Yes, sir. 0.3. ठीक है? And 2 into 44 it is, oh, sorry, 2 into 22 it is 44, not 66. Yes, yes, sir. Get it correct? That is 44 into 3, that is you are getting how much? 132. 13.2. 13.2 centimeter is the distance. So get it correct. That is 13 point. ठीक है 13.2/60. Get it corrected. ये 2 pi r था ना, 3 नहीं था.
44 into 0.3 you are getting 13.2 centimeter. ठीक Yes, है? sir. अभी 13.2 सेंटीमीटर को 60 से डिवाइड करो, कितना जाएगा? 0.2. ठीक है, 0.22. So it is 0.22 centimeter per second. Okay, get it clear? ये 0.22 सेंटीमीटर पर Yes. सेकंड. ठीक है, get it? यहाँ ये बाय मिस्टेक हो गया था. इट इज 2 पाई आर, एक्चुअली नॉट 3. ठीक है, यस इट इज क्लियर Yes, रानी? sir. Yes, sir. ठीक, ओके. ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको फिगर सबसे जरूरी है. आपको देखना है कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग में वो फिगर क्या बता रहा है. जैसे आपने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके वन ऑफ द कलीग ही हैज आस्क्ड, तो दैट वाज अ स्क्वायर फील्ड. और आपका क्वेश्चन में है ये क्लॉक सर्कुलर. तो हैंड्स ऑफ द सेकंड हैंड्स जो है दैट एक्ट एज अ रेडियस. यदि हम इसकी फिगर को बनाएंगे तब हम देखेंगे कि ये सर्कुलर फेस जो है, ये सर्कुलर फेस ऑब्जेक्ट जो है इट रिजेंबल लाइक अ सर्कल. जो आपका क्लॉक और हैंड्स, ये जो सेकंड हैंड है, ये सेकंड हैंड का लेंथ जो है इट रिजेंबल्स लाइक अ रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इसको हम लोगों ने रेडियस माना और देन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन. तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय द सर्कमफरेंस. वो जो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल होता है व्हिच इज 2 पाई आर. देन यू गो थ्रू द, you put the value, you calculate it. अब देखो कि स्पीड आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो दिस इज द डिस्टेंस व्हाट you have calculated and the time, and finally you are getting 0.22 centimeter per second. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, anyone next? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है जिसमें मतलब कि एक्सेलरेशन फाइंड हो चुका है, डिस्टेंस नहीं हो रहा है. आपका क्वेश्चन क्या है? Sir, a bus was moving with a velocity of 54 km per hour. On applying brakes, it stops in 8 seconds. Find the acceleration produced and distance covered by the bus during the time. This time. Sir, acceleration find हो चुका है, बस distance नहीं हो रहा. First of all, you read the question. Bus is moving with a velocity Of 54 km per hour. so you see 54 kilometer per hour. The initial velocity you, which we call the initial velocity. Yes, sir. उसके बाद Sir, time 8 second. time 8 second. 8 second. Okay. Yes, sir. Time. Yes. 8 second. बोलो. और And that's all. And we have to find the velocity and distance. now you read down the question. Question पूरा पढ़ो फिर से. A bus was moving with a velocity of 54 km per hour. On applying brakes, it stops in 8 seconds. Find Okay. the acceleration. On applying the brake, the bus stops. Bus stop, that is according to question. Your final velocity, that is the final velocity is 0. ये चीज हमेशा नोट करके Yes, sir. रखना. जब भी ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने के बाद जब कोई भी व्हीकल या बस इट विल स्टॉप. स्टॉप का मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया. अब आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन. Yes, sir. Sir, acceleration हो चुका है. अच्छा, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो. अभी देखो Sir, निकाल लिए हुए हैं. 54 per hour. Minus 1.87. Convert this 54 kilometer per hour in meter per second. कितना Sir, होगा? 50 meter per second. 15 meter per second. 54 into 1000 by 3600. What you are getting? How much? Sir, 15 meter per second.
that is 15 meter per second. Now देखो अब आपके Yes, पास ये डाटा है, एक बात पहले समझ लो, आपके पास ये डाटा है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है that is 15 मीटर पर सेकेंड, आपके पास टाइम पीरियड है 8 सेकेंड, और आपको मिल गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर दिस वी विल प्रोसीड टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि Yes, ये sir. आपको जरूरी है, आप इसको लेकर चलोगे, जैसे यहाँ हम कह रहे हैं ना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो नाउ वी विल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या पता है? Sir, A is equal to V minus U by T. ओके, ये लाइन इज मस्ट, क्योंकि यदि आप ये नहीं लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप ये नहीं लिखोगे तो आपका u क्या है, आपका v क्या है, आपका v कैसे आया 0, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एंड यू नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स हियर। लेकिन अब आपको लिख दिया है हर का परिचय और दोनों अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा आ रहा है। नाउ वी प्रोसीड हियर कि आपका v है 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 8. वैल्यू माइनस 15 बाय 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, ये Yes, sir. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये आपको रिटार्डेशन मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए कि जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, आप इसको समझ लो, यहाँ पर इस पॉइंट को समझ लो कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, कभी भी इस तरह का केसेस होगा तो वो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि दैट विल बी द रिटार्डेशन, तभी आपका रिटार्डेशन आएगा। ऑलरेडी आपका वैल्यू आ गया -15/8, ठीक है। नाउ रानी, व्हाट्स नेक्स्ट? डिस्टेंस। Yes, sir. Yes. Now we have to also find out the how much distance the vehicle covers before it come to rest, यही ना, रुकने के पहले वो कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We have to go through the second equation of motion. We have to go through second equation of motion. देखो, here, or we can also take the third equation of motion भी। देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम लगाते हैं, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, what we know, 2as is equal to v square minus u square, ये होता है। अभी आप देख लो, आपको इसमें चाहिए डिस्टेंस, तो s is equal to v square minus u square by 2a. What is the value of v? वैल्यू ऑफ v आपका है 0, u का आपका वैल्यू कितना है 15, that is the square of 15, and एक्सेलरेशन आपका कितना आया है 2 into 15/8, तो आपको ये मिल रहा है क्या 225 डिवाइडेड बाय 2 into 15, 8 ऊपर चला गया, 15 4. Now you see, you are getting a distance of 16 meter. Are you getting it? अभी देखो यहाँ पर u स्क्वायर का, इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ s कैलकुलेट करने के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, यहाँ हमारा a जो था वो क्या था, निगेटिव था, ठीक है, ये निगेटिव था, इसलिए ये निगेटिव कैंसिल हो गया, और
what you are getting 225 into 8 divided by 2 into 15. तो 15 को हम काटेंगे 225 को 15 टाइम्स और 2 अब आपको समझ में आया? Yes, sir. आ गया? डिस्टेंस आया? तो ये हमने Yes, sir. डिस्टेंस कवर करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ले सकते हैं, हम थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। देखो, जब तक कि क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे नहीं कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नोट करना है कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है। जब आपके पास सारे डाटा आ जाएंगे, देखो ऑलरेडी बोर्ड पे देख रहे हो, सारे डाटा आपके सामने हैं। जब Yes. सारे आ जाएंगे, देन यू कंसीडर कि अब आपको उसमें क्या कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर, आप उसको कोई से फॉर्मूला लगाओगे। तो हमारे पास जब देखेंगे कि यहाँ जब इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात आ रही है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन है जहां पर हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां पर हम डिस्टेंस को अवॉइड कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन में भी हम डिस्टेंस को अवॉइड कर सकते हैं जब हमारा एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके ओके, यस, नेक्स्ट। Yes, sir. Sir, as we know, that's the second equation motion is used to find the distance. So, sir, what is the main purpose to use the third equation of motion? No, in both the equation you just see what are the given data. जैसे इस डाटा में हमने थर्ड इक्वेशन क्यों किया, आप देख सकते हो जो गिवन डाटा है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका पता हो गया, वी हैव गॉट योर टाइम पीरियड, यहाँ हम लोगों ने यूज नहीं किया है, लेकिन एक्सेलरेशन जब हमारा निकल गया तब यहाँ हम यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है? इसको आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपका ऑलरेडी ये सारे डाटा Distance, sir. ठीक है ना? लेकिन Yes, हम sir. देखें इसमें हमको सिंप्लीफिकेशन कौन सा पड़ेगा। हम यहाँ पर दोनों यूज कर सकते थे, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। ठीक है? यू जस्ट डू इट, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है? Okay, sir. यस, नेक्स्ट। Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, a man travels a distance of 5 meters towards east, then 3 meters towards south, and finally 5.6 meters towards east. Then first, what is the total distance, and second, what is his resultant displacement? Okay, you just repeat the question. हाँ बोलो। Yes, sir. First we will draw the figure. पहले फिगर बनाते फिर देखते हैं। हाँ बोलो, फिगर में बोलो। Yes, sir. And Yes, sir. A man travels a distance of 5 meters towards east. now you see, you can see the figure. देख रहे हो? Yes, sir. ये 5 मीटर ज्यादा है, 5 मीटर। Towards east. Then Sir, then 3 meters towards south. yes, 3 meter. Let this point see. 3 meter towards south. हाँ बोलो। And then finally 5.6 meters towards east. 5.6 meter towards east. यही ना? Yes, sir. Now you see, here the direction is already given here. So Yes, what we will first of all find out the distance, the total distance. You see the total distance covered. Total distance covered. AB plus BC plus CD. ठीक है? Yes, देख sir. रहे हो? AB. So AB is 5 meter plus 3 meter
plus 5.6. How much you are getting? 5 plus 3, 8. 8 plus 5. 13.6 meter. Okay, 30.6 meter. It is the total distance covered by the man. Yes, next follow. Yes, sir. Next is, what is his resultant displacement? Okay, you just see. Now we will see what the resultant displacement would be. So resultant displacement क्या होगा? We will just join the line A and D. ये देख रहे हो? Yes, sir. AD जो हो गया ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. That is the displacement is given by displacement is equal to AD. Now अब AD को हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हम दो तरीके से करेंगे. अभी क्या करते हैं हम, सपोज करो इसको एक हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं सी को टुवर्ड्स ए और इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, Yes, हम sir. इसको कर दिया. सपोज करो ये ई है, इसको एक्सटेंशन है. दीज आर द डॉटेड लाइन. ठीक है, डॉटेड नॉट एक्चुअल. Yes. ये क्या करें हम ए ई को पैरेलल, इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए. ठीक है, Yes. टेक सी ई एज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर. सी Yes, को sir. हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं. ये 5 मीटर है. ठीक है, 5 मीटर. सो दैट EC इज इक्वल टू AB. अब ये क्या है, रेक्टेंगल बन गया. Yes, sir. रेक्टेंगल हो गया ना, तो AB का जो लेंथ है वही हमारा EC का लेंथ है. ठीक है, sir. सिमिलरली जो हमारा BC का लेंथ है वही हमारा AE का लेंथ है. दैट इज 3 मीटर. Yes. ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, Yes. दिस लाइन AE इज परपेंडिकुलर टू ECD. समझ गए? Yes, sir. अभी हम देखो, अब इस फिगर से आपको क्या नजर आ रहा है कि AED इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, Yes. अभी देखो कि इन राइट ट्रायंगल AED, नाउ यू सी इन AED, ये राइट ट्रायंगल में अगेन वी कम अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम. देखो, Yes. साइंस में, फिजिक्स में या मैथ्स में आपको ये जरूरी होता है कि आप किसके रूल्स के अनुसार कोई चीज आप लेके चल रहे हो. जैसे अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना AED. ठीक है, Yes, अब sir. हम पिथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AD. तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, यू आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ AE प्लस स्क्वायर ऑफ ED. स्क्वायर ऑफ ED. ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट. ये आपका कितना है, 3. स्क्वायर ऑफ 3 प्लस, अभी देखो आपका ED क्या हो गया, 5 प्लस 5.6 मतलब 10.6. Yes, sir. ये 10.6 का स्क्वायर हो गया. अब इसका देखो, ये 3 का स्क्वायर 9, 10.6 का स्क्वायर कितना होगा. यू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 10.6. Sir, Sir, 112.36. 12.36. You are getting 112.36. Yes, sir. Yes, sir. 112.36. ठीक है, एंड प्लस 9, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121.36. Yes, sir. You finally Yes, sir. find out the value of AD. AD कितना हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 121.36. आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 121.36 का एंड यू विल गेट 11.6. Yes, sir. Okay. 11.1. 11.6 मीटर. Yes. Okay.
Yes, sir. ये क्लियर है? देखो Yes. हमारा फिगर जो ये आया था ये हमने बनाया फॉर कंस्ट्रक्शन पार्ट। जैसे आपने देखा है ना कि मैथ्स में भी आपको बहुत जगह कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है टू प्रूव एनीवन, खास करके आपको आएगा व्हेन यू हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा या बहुत सारे आपके फिगर आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स में भी जहां आपको प्रूव करना होगा, यू हैव टू प्रूव। तो फॉर दैट वी गो टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो यहाँ भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है? Is it Yes. clear now? Yes. We have got to discuss the total distance covered और this is the displacement, ठीक है? तो ये तो देख रहे हो ना कि displacement is the shortest distance. Total Yes. distance में displacement जो है shortest distance है, तो आपको पता ही होगा कि displacement क्या होता है, shortest distance covered by any object। तो देख रहे हो जब ये distance cover कर रहा है तो from A to B, B to C and then C to D and we are getting 13.6 meter। लेकिन Yes. जब डिस्प्लेसमेंट हमको करना पड़ेगा तो दैट इज द एरियल रूट। इसको हम एरियल रूट भी करते हैं जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली बात करते हैं। सपोज करो कि आप यहाँ से मुजफ्फरपुर जा रहे हो, तो इफ यू आर गोइंग थ्रू द रोड साइड तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा अम्बारा, अम्बारा से फिर यू हैव टू गो थ्रू द राइट साइड, ठीक है? तो ये आपका जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल कम नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये एरियल रूट है, ये एरियल रूट 24 किलोमीटर ये आ रहा है, ठीक है? Yes. सिमिलरली टू द सम ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स, देखो साइंस में बहुत सारे जो आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, आप इसको टैली करो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की मोमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा एरियल रूट है। ये इनिशियली इस पोजीशन पर थे, फाइनली यहाँ पर आ गए, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जब हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमको ऐसे भी दीज आर द डिस्टेंस, ठीक है? Yes, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, any questions? Yes, sir. Sir, a train is starting with rest position and Okay. moving. 1 minute. Speak out. Sir, uniform acceleration, speed 42 kilometer per hour and time 10 minutes. You read out the question again, Pado. Sir, a train is starting with rest position and moving with the uniform acceleration. Starting from rest. Yes, sir. Sir, then initial velocity is equal to 0. Okay, yes, initial velocity is 0 in that case. Yes, sir. Sir, final velocity 42 kilometer per hour and time 10. Sir, इसमें first equation of motion use होगा. आपको निकालना है क्या है उसमें? Acceleration. एक्सीलरेशन निकालना है। आप देख लो Yes, sir. Sir, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, यू आर गेटिंग 0। Yes, sir. Sir, V 42 kilometer per hour. 42 kilometer per hour converted into meter per second. Yes, sir. 40.35 by 3 meter per second. How much? 35 by बोलो। 35 by 3 meter per second. That is 35 by 3 meter per second, ठीक है?
Next follow. Time how much? 10 minutes. 10 minutes. ठीक से पढ़ो क्वेश्चन. 10 मिनट बहुत ज्यादा समय हो जा रहा है. क्वेश्चन पढ़ो फिर से. Yes, read out the question again. Yes, sir, 10 minutes. 10 minutes. Okay. So 10 minutes is equal to how much? 600 seconds. 600 seconds. And what you have to find out? Acceleration. Acceleration. Then simply, if according to the data you will see from the first equation of motion, we will calculate it. Okay. Go through the first equation of motion. From first equation of motion. Okay. A is equal to B minus U by T. U by T. Okay. You put it the value. Value put it karo. 35 by 3. 35 by 3 into 600. Okay. Do your calculation. 35 divided by 3 into 600. You see here. Okay. तो ये आ जाएगा 35 by 1800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आप कैलकुलेट करो. 35 divided by 1800. सर 0.0194444 देख रहे हैं. Sir, 0.194. Okay. So you can calculate it. वो तो पता चला है ना, कैलकुलेशन हुआ. Yes, sir. ठीक है. तो you have got it. आपको आंसर मिला. Yes, sir. Okay. Okay. Any other? Yes. Any other questions? Yes, we are waiting for your questions. बोलो. Yes, any other questions? Now you see we have just 5 minutes left here. 5 minutes left. Any questions? Yes, speak out. Yes, speak out your Sir. question. Yes, सर sir. ड्राइव द Of- थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हाँ बोलो. सर ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. Derive third equation of motion. You see time is only 5 minutes. But anyhow we can get here. You see derive third equation of सर यही तो हम no. To derive the third equation of motion,
we have to go through our previous, that is first equation of motion or second equation of motion. Okay. For that we have some identities. पहले हम उस identities को note कर ले कि क्या क्या है. ठीक है. Yes, sir. Let u be the initial velocity. U is the initial velocity of any object. ठीक है. V the final velocity. A is the acceleration produced. T is your time period. Time taken or time period. ठीक है. और S is the distance covered. Covered. Okay. Now, from first equation of motion, first of all, we have to write it. From first equation of motion, what we know? A is equal to V minus U by T. Okay. Or Yes. we can with T is equal to V minus U by A. Let it be equation 1. देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है. A is equal to V minus U by T. और हम इसको लिख सकते हैं कि T is equal to V minus U by A. ठीक है. Yes, sir. Then from second equation of motion, what we have learned, S is equal to UT plus half AT square. ये पढ़े थे. UT Yes, plus sir. half AT square. ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. अभी देखो. Yes. फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसमें क्या करेंगे? टी की वैल्यू पुट अप करेंगे. इक्वेशन 1 में हमारा टी का वैल्यू है v माइनस यू बाई ए. हम इसको यहाँ पुट आउट करेंगे. यू आर गेटिंग u v माइनस यू बाई ए प्लस 1 बाई 2 a इंटू v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर. ये आ रहा है समझ में? इसको दिखाओ. ये समझ में आ रहा है? देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हाँ टी है वहां पर हम इसको इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं. v माइनस यू बाई ए प्लस 1 बाई ए इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है आपका. ठीक है. अब यू कैलकुलेट इट. u इंटू वी मीन्स यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस 1 बाई 2 ए. अभी देखो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा. ए का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और बी माइनस यू का होल स्क्वायर ये आ रहा है. ये आपने पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. यू आर गेटिंग बी स्क्वायर माइनस यू प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub. देखो v माइनस यू का होल स्क्वायर ये आपका आ गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub. ठीक है. अब ये आप देख लो नीचे वाला देख रहे हो रीडिंग. Yes, sir. Yes, sir. ये रीडिंग आ रहा है नजर. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम आगे लेके चलते हैं. देखो अभी देखो सर ए से ए पर ए और ये स्क्वायर कट गया. आपके पास यहाँ पर नाउ वी विल टेक दोनों का हम ले रहे हैं क्या? एलसीएम लेते हैं. ए और 2a का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा? 2a. 2a. That will be 2a and you here come here. देखो इधर ये a है, हमने एलसीएम लिया है 2a.
मतलब क्या होगा, इसको 2 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, UV माइनस U स्क्वायर। और यहाँ क्या आपको बच रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है V स्क्वायर माइनस प्लस U स्क्वायर माइनस 2UV। अभी देखो ये हो गया 2UV माइनस 2 U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2UV डिवाइडेड बाय 2A। 2UV प्लस है, ये 2UV माइनस है, दोनों कैंसिल, देख रहे हो। Yes. आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये 2UV प्लस है, यह माइनस है 2UV, दोनों कैंसिल। अभी आपके पास क्या बचा, आपके पास बच रहा है, देखो इधर V स्क्वायर है, V स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस U स्क्वायर बाय 2A। और फाइनली आप इसको लिख सकते हो, ये S था ना, S इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये समझ में आया? Yes, sir. Is all about the mathematical derivatives. These are all the mathematical expressions कि आप mathematically express कैसे करोगे, ठीक है? Is it clear? Yes. I think you have enjoyed your classes. Class enjoy किए? Yes, sir. Yes, sir. I think that knowing about all the doubts and difficulties जो आप लोगों ने यहाँ पर अपना put down किया, and you have also got your solution for it. Solutions भी आपको मिला यहाँ, समझ में भी आया? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, that's all. Enjoy your classes. That's all for today. Okay. Thank you, sir. Thank you, student. And we are going to upload the sir video on YouTube also. So just do follow that one. If it is any doubt is there, just you can ask that time. Okay. Okay, everyone. Just joining every day. Every 6:30 we are just doing the classes on that. Now means every evening, correct? So see all the videos and do like on that, correct? And keep share with other students also. Okay, everyone. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.